आं मुस्रि बिस्वजित दैमारी हादोर गौथुमनि बिसायख' जानाय सासे सोद्रोमा इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। बडो बडो शुभेच्छा। गुजरात श्री दिनेश चंद्र जेमल भाई अनावाडिया। ठीक है। अहम दिनेश चंद्र जेमल भाई अनावाडिया राज्यसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि। ईश्वरस्य नाम्ना सपे यद अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्णं रक्षिष्यामि तथा यद पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। गुजरात श्री राम भाई हरजी भाई मोकारिया। मैं राम भाई हरजी भाई मोकरिया जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Honorable members, I have an advice that members who come to the house, they can wear their traditional headgear or angavastram or whatever it is, but it's better to avoid party symbols. The moment once you enter into the hall, we have to maintain. This applies to all parties, not to one party or one symbol. This has to be. Thank you. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Vidyasagar Nishad, I am very sorry, and Sri M. Rama Joyce and Sri Satish Sharma, former members of this house. Sri Vidyasagar Nishad passed away on the 14th July 2020 at the age of 90 years. Born in June 1930 at Kashim Bazar in Munger district of Bihar, Sri Nishad was educated in the Kashi University, Varanasi. A social worker, Sri Nishad strived for the upliftment of the poor and backward sections of the society and was actively associated with the movement launched by Sri Jayaprakash Narayan in 1974. Sri Nishad started his legislative career as a member of Bihar Legislative Assembly in 1989
and served as a member of that assembly for 2 terms. He also served as cabinet minister in the government of Bihar, holding portfolios of fisheries and fodder, veterinary and statistics and evaluation from 1990 to 1994 and that of labor from 1995 to 1997. Sri Vidyasagar Nishad represented the state of Bihar in this House from June 2004 to April 2006. In the passing away of Sri Vidyasagar Nishad, the country lost an administrator, a dedicated social worker, and an able parliamentarian. Sri M. Rama Joyce passed away on the 16th of February 2021 at the age of 89 years. Born in July 1931 at Araga in Shimoga district of Karnataka, Sri Rama Joyce was educated at the Central College and the Government Law College, Bengaluru. A legal luminary, Sri Rama Joyce served as Judge of the High Court of Karnataka from 1977 to 1992, as the Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana from May to September 1992. He also served as the Governor of Jharkhand from July 2002 to June 2003 and as the Governor of Bihar from June 2003 to October 2004. A towering intellectual, Sri Rama Joyce authored several books on jurisprudence and philosophy, including well-acclaimed Legal and Constitutional History of India and Dharma, the Global Ethic. Sri Rama Joyce represented the state of Karnataka in this House from June 2008 to June 2014. In the passing away of Sri M. Rama Joyce, the country has lost a noted jurist, an acclaimed writer, and an able administrator, and a distinguished parliamentarian. Sri Satish Sharma ji passed away on the 17th of February 2021 at the age of 73 years. Born in October 1947 at Secunderabad in Andhra Pradesh, now in Telangana, Sri Satish Sharma pursued his education at Delhi, Hyderabad and USA and obtained commercial pilot's license and airline transport pilot license. An accredited commercial pilot, Sri Sharma was keenly interested in lawn tennis and aero sports and served as the president of the Delhi Lawn Tennis Association and Delhi Flying Club and the Aero Club of India and as the vice president of the Federation of Aeronautics International, Paris. Sri Satish Sharma served as a member of Rajya Sabha thrice, representing the state of Madhya Pradesh from June 1986 to November 1991, the state of Uttarakhand from July 2004 to July 2010, and the state of Uttar Pradesh from July 2010 to July 2016 in this House. He served in the Council of Union Council of Ministers as Minister of State, independent charge of the Minister of Petroleum and Natural Gas from 1993 to 1996. He also served as a member of 10th, 11th and 13th Lok Sabha. In the passing away of Sri Satish Sharma ji, the country has lost an able administrator, a passionate aviation sports enthusiast and a veteran parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri Vidyasagar Nishad, Sri Rama Joyce and Sri Satish Sharma. I request the members to rise in their places and observe as a mark of respect to the memory of the departed silence. Om Shanti, Shanti, Shanti. The Secretary General will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy. Please sit down. Please sit down. This is not the way. This is not the way, Pendarji. You have. See. Honorable, please hear the observation of the chair. Please. This is not going to be part of the proceedings. Please. The Minister of Parliament Affairs, I have already said it. I got it examined. There is no precedent. I have said it in the House. Again, if you ask me, what can I do?
the Minister of Parliamentary Affairs, Sri Prahlad Joshi ji, Honorable Leader of the House, Sri Tawarchand Gehlot ji, Honorable Leader of the Opposition, Sri Mallikarjun Kharge ji, leaders of various parties and groups in the House, and respected members. I extend a warm welcome to all of you to the second part of the ongoing budget session of Parliament. On behalf of the entire House and on my own behalf, I compliment Sri Mapanna Mallikarjun Kharge ji on assuming the office of the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha. He is one of the long-serving leaders of the country with vast legislative and administrative experience. Sri Kharge ji was also leader of this largest party in Lok Sabha, opposition party in Lok Sabha during 2014 to 19. He was also leader of the opposition in the Karnataka Legislative Assembly twice during 1996 to 1999 and in 2008. Sri Kharge ji has been a legislator since 1972 and having been elected a record 9 times successively to the Karnataka Legislative Assembly and has been a member of Lok Sabha twice during 2009-19. He has the distinction of being the leader of the opposition on his first election to the Rajya Sabha. Leader of the opposition has a major role in enabling the smooth functioning of the House as per the rules of procedure and convention of the House. I am confident that this august House will benefit significantly from the rich and diverse experience of Sri Kharge ji, who has witnessed the functioning of the legislature in the state and centre, both from right and left side of the chair. Honourable members, we take pride in our country being the largest democracy of the world, whose vibrancy is increasing with every election. Parliamentary democracy is all about numbers and putting the numbers to the best use and effect in the interest of the people, the patrons of democracy. Over the last 5 sessions, this august House has been recording high productivity even as we have had some testing times. The productivity of the House during the first part of the ongoing budget session has been about 100%. I would only expect this trend to continue during the second part as well. Both the House of Parliament took a 3-week break for the examination of the demands for grants of various ministries and departments for the financial year 2021-22 by the 24 department-related parliamentary standing committees. This is one of the important functions undertaken by these committees on behalf of the Parliament. It is in order for me and even necessary to give you a brief account of the functioning of the 8 department-related standing committees of the Rajya Sabha with the 242 members from both the houses during the recess. I would like to highlight some positive and emerged during the examination of demands for grants of 18 ministries by the committees of this august House and some concerns as well. I am happy to inform the House that the committee of Rajya Sabha, 8 committees, spent 12% more time examining the demand for grants for 2021-22 than in the case of last financial year 2020-21. The committees held a total of 21 meetings this year for a total duration of 70 hours, 27 minutes, as against 20 meetings with a total duration of meeting of 63 hours last year. The participation of the members of Rajya Sabha in the meeting of these 8 committees have improved substantially over the last year. The overall attendance of the members of this august House in the meetings this year has risen from 58.24% as against 52.57% last year. The attendance of the members of the Lok Sabha has, however, declined to 31.86 this year from 46.37 last year. Yet another significant improvement, 39 members of the Rajya Sabha, accounting for 50% of the 78 members of this House on these committees, have attended all the meetings of the committees this year. 36% of the Rajya Sabha members have attended all meetings of the committee last year. In respect of the 164 Lok Sabha members of these committees, number of those with full attendance has declined from 26.21% this year from 35% last year. I am happy to note that there has been a quorum in all the 21 meetings this year.
while there was no quorum in 3 of our 20 meetings held last year. I have been urging the chairman and members of the committees of Rajya Sabha to enable longer duration of the meetings given the time, energy and costs involved in holding the meetings. In this regard, I am happy to inform that of the 21 meetings, only 3 were held for a duration of less than 2 hours each. It is significant to note that 4 of the 8 committees met for much longer duration a day, indicating the scope for making the most out of each meeting. The Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports met for the longest of 6 hours 25 minutes in a day. This was followed by the Committee on Transport and Tourism, 6 hours 13 minutes. Committee on Personal and Public Grievances, 5 hours and 30 minutes. And the Committee on Commerce, which met for 5 hours and 25 minutes in a day. In the case of meetings this year, the Committee on PPG has reported the highest average attendance of 51.19%, followed by the Committee on Health and Family Welfare, 48.38%, Committee on Industry, 46.15%, and the Committee on Home Affairs, 41.66%. For the other 4 committees, the average attendance has been about 40%. The Committee on Commerce has reported the maximum improvement in attendance, clocking 40% this year as against 32% last year. Some concerns in respect to the meetings of the committees this year include decline in overall attendance this year to 42% from 48% last year, an increase in the number of members who have not attended any meetings this year. Low attendance of members from parties other than BJP and the Congress in the meetings of the committee remains a major concern. Overall attendance of members from such parties and groups this year declined to 27.60% from 40.5% from last year. This needs to be addressed too by the concerned parties. I place these facts about the functioning of the department standing committees on record and in public domain from time to time, given the importance of these committees for the 24/7 functioning of the Parliament and the significance of the work being done by these committees. That is the purpose of making this announcement. I compliment the chairman and members of the 8 department-related standing committees of Rajya Sabha for their efforts towards improving the functioning of the committees and hope that they will focus on the areas that need betterment. Honorable members, quality debates and discussions enrich the proceedings of the legislature. Sufficient homework is required on the part of the members to make such quality contribution to the debates and interventions. Legislators do have some broad understanding of major issues taken up in the legislature, but an in-depth and analytical understanding of each issue makes the real difference. This is possible only through study of books and journals from time to time on chosen subjects. Library is the principal source of such enhanced understanding. The Parliament Library is completing 100 years this year. It has a huge collection of about 14 lakh books, including hundreds of journals in all the languages. I am told that the footfall of the members of Parliament in this source of information and knowledge is not very encouraging. The Library Committee is taking some initiatives like organizing displays to acquaint the members of Parliament with the range of books available. I urge upon all the members of Parliament to make effective use of Parliament Library for making a difference to the debates. Going to library is going to enhance your knowledge. Attending the session, not missing it, also enhances the understanding of the parliamentary procedures. So I call upon the members to please visit the library, make use of the library. It's your own library. And also, please attend the Parliament. Sometimes I wonder what happens to members of Parliament. On information I am told they are in Delhi, but they are not present in the House.
This is not about any particular member or any party. I appeal to all the members. Please make it a point to be in the House and then observe the debates. Enrich your knowledge. That is my appeal to all of you. With these words, I once again welcome you all to this part of the budget session and hope that collectively we will make it a memorable session. Dhanyavad. One minute. I'm coming back. Honorable members, today, March 8th is the International Women's Day, a day to celebrate the social, economic, cultural and political contribution and achievements of women across the globe and honor their indomitable spirit, resolute determination and incessant efforts which underline these achievements. This is also a day to take stock of the hurdles coming in the way of ensuring women their due in all walks of life and socio-economic development. This is an occasion to renew the efforts made in this direction, the progress made and the distance still to be covered. The United Nations theme for International Women's Day this year is Women in the Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. This theme celebrates the tremendous efforts by women and girls around the world in shaping more equal future and recovery from the COVID-19 pandemic. It is also aligned with the United Nations Women's Generation Equality Campaign, which calls for women's right to decision-making in all areas of life, equal pay, equal sharing of unpaid care and domestic work, ending all forms of violence against women and girls, and ensuring health care service that respond to their needs. The honourable members, COVID-19 is once-in-a-century health crisis, has tested human resilience and a fighting spirit to the hilt. Women across the world and in our country too have been at the forefront of tackling the pandemic, be it doctors, healthcare workers, bureaucrats, scientists, innovators, community organizers, or caregivers at home. They have worked above the beyond the call of duty to ensure that the effect of pandemic on our country is minimal. Women of our country have been active participants in shaping the history and contemporary times, from actively participating in the freedom movement to leading movements for environmental protection, and from taking steps to kindle their entrepreneurial spirit to the very pursuit of women's rights in India. We have seen them positive in diverse domains. While the things have improved substantially over the years, there is still a considerable ground to cover before women get their due by necessary empowerment and entitlement. Need of the hour is all-encompassing empowerment and emancipation of women across the social, regional, and rural-urban divide to give a fillip to rapid socio-economic transformation. For this, we need to strive for realization of the values and principles enshrined in our Constitution, which provides for equality of status and opportunity and enjoins upon every citizen to renounce practices derogatory to the dignity of women. Our nation as a whole cannot progress and rise to full potential if one half of it is restricted in making new contributions. So let us resolve on this occasion to remove all barriers, psychological, socio-cultural, economic and political, that deny women their due. We need to ensure an environment that allows women express them to their full potential in the form of both words and deeds. On behalf of all members and on my own behalf, I place on record the appreciation of the services rendered by the women members of this House and also the women citizens of the country for the development and prosperity of the nation, and I wish more strength and power to them in the future also. March 8th, papers to be laid on the table. Sri V. Muralidharan, papers laid. Papers laid on the table. Moka dunga. Chairman sir, with your permission,
On behalf of my senior colleagues and other colleagues, Sri Prakash Javadekar ji, Sri Prahlad Joshi ji, Sri Mansukh Mandviya ji, Sri Arjun Ram Meghwal ji, General Retired V.K. Singh ji, Sri Babul Supriyo ji, and Sri Ratanlal Kataria ji, I lay the papers listed against their names from serial number 1 to 7 in today's list of business. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 12th of February 2021 passed the Arbitration and Conciliation Amendment Bill 2021. B. Had agreed to the amendments made by the Rajya Sabha to the Major Port Authorities Bill 2021 at its sitting held on the 10th of February 2021. And 2. On the 13th of February 2021 had agreed without any amendment to the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2021, which was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 8th of February 2021. I lay a copy of the Arbitration and Conciliation Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha on the table. Reports of the Department Related to Parliament Standing Committee on Health and Family Welfare. Professor Ram Gopal Yadav. श्रीमान, मैं आपकी अनुमति से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 1, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदान मांगों 2020-21 के संबंध में 118वें प्रतिवेदन में अंतर्गत सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 125वां प्रतिवेदन। 2, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों 2021-22 के संबंध में 126वां प्रतिवेदन। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही है, की अनुदान मांगों 21-22 के संबंध में 127वां प्रतिवेदन। धन्यवाद। Reports of the Department Related to Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change. Sri Jairam Ramesh. Sir, with your permission, I rise to present the 341st, 342nd, 343rd, 344th, 345th, 346th and 347th reports, both in English and Hindi, of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on demand for grants for the financial year 21-22 of the Departments of Atomic Energy, Biotechnology, Scientific and Industrial Research, Science and Technology, Space and Ministries of Environment, Forest and Climate Change and Earth Sciences respectively. Thank you. Reports of the Department Related to Parliamentary Standing Committee on Energy. Dr. Sudhanshu Trivedi. Sir, I wish to lay the copy each of the following reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Energy as listed against my name in today's list of business. 1. Sixth report on the demand of grants for 2021-22 relating to the Ministry of New and Renewable Energy. Second, seventh report on the demand of grants 2021-22 relating to the Ministry of Power. Reports of the Department Related to Parliamentary Standing Committee on Railways. Sri Narhari Amin. लोक सभा माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेलवे संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the Department Related to Parliamentary Standing Committee on Urban Development. Sri Sushil Kumar Modi. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के आगे यथा सूचीबद्ध आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2021-2022 के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति 17वीं लोकसभा का 5वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the Department Related to Parliamentary Standing Committee on Water Resources. Sri Harshavardhan Singh Dungarpur. Sir, I rise to lay on the table the 10th and 11th reports of the Standing Committee on Water Resources 2020-2021 as listed against my name in today's list of business. 1. 10th report
on demand of grants 2021-22 of the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. 2. 11th report on demand of grants 2021-22 of the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation. Honorable members, I have to inform the members that a letter has been received from Ripun Bora, member, stating that he is not able to attend the sittings of the House from March 8th to 8th April due to personal reasons. He has therefore requested for grant of leave of absence till the end of second part of the ongoing 253rd session of Rajya Sabha. Does he have the permission of the House for remaining absent from 8th March to 8th April during second part of the ongoing session of Rajya Sabha? The permission to remain absent is granted. Zero hour. After that we will take it down. The Srimati Vandana Chavan, I think she sent a महिला है ना वंदना चौहान, मैं उनको बुलाने वाले हूँ या प्रेसाइड करने के लिए, तो नहीं आया, तो आपको भी बुला सकता हूँ। मेरी अभी नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने चिट्ठी भेजा, इसलिए मैंने सोचा उनको बुलाऊं। बाद में मुझे यहाँ लेटर मिला, उनका फ्लाइट में है, फ्लाइट देर हो गया। श्रीमती छाया वर्मा, एक मिनट बाद में आ जाऊँ। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगर मैं शास्त्र की बात करूं तो यत्र नारी पूजते रमते तत्र देवता, और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया है। बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है ये नारा। आज बेटी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। अगर मैं छत्तीसगढ़ पॉजिटिव ना छाया जी, टुडे इज ए वेरी पॉजिटिव ओकेशन। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, हम इसी में लग जाए तो फिर कुछ होगा नहीं, ऐसे ही चल रहा है 20 साल से। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो तीजन बाई, जो एक अनपढ़ महिला थी, तीजन बाई से लेकर कल्पना चावला, जो आसमान में रही, धरती से लेकर आसमान तक महिलाओं ने सर्वत्र अपना जौहर दिखाया है। चाहे आज के समय में चाहे फाइटर लड़ाकू विमान चलाने की बात हो, बस उनको अवसर मिलने की आवश्यकता है। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने महिला आरक्षण पंचायती राज में और नगरीय निकाय में लाके महिलाओं को अवसर दिया। सर, आज महिलाएं सभी जगह सशक्त हैं। मैं चाहती हूं सदन के माध्यम से आज विशेष दिवस के उपलक्ष्य में कि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरु रानी मेहतम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी। संक्षिप्त में महिलाओं का विकास के लिए धन्यवाद सभापति अध्यक्ष महोदय। आज राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सबको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित तौर पर महिलाएं राष्ट्र लेवल पे काम कर रही हैं, पर शासन की नीतियों से कहीं ना कहीं महिला दुखी हैं। महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन कहीं भी लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं आज महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम निवेदन करते हैं, देश के आपके माध्यम से मैं निवेदन करती हूँ, खास तौर पर महिलाओं का किचन का बजट बिगड़ चुका है, इसलिए महंगाई पे चर्चा हो और महंगाई कम किया जाए। मैं बहनों और भाइयों, हम इस विषय को लेकर इतना साल देख रहे, तो राजनीति लाने से क्या होगा, विषय समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए महिलाओं को मौका देके उनको इस विषय में पॉजिटिवली कुछ कहना है, सुझाव देना है, शुभकामना देना है, यही उद्देश्य था। अदरवाइज हम जैसा 20 साल से चला रहे हैं ऐसा भी चला सकते हैं, आगे भी और उसी के बारे में बात कर सकते हैं। श्रीमती सरोज पांडे, मेरे पास सब नाम है।
मिस सरोज पांडे, सॉरी जी। नो राजनीति प्लीज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया, मैं आपको साधुवाद देती हूं। माननीय सभापति जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि महिलाएं बेहद सशक्त हुई हैं। महिलाओं पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तो वैसे भी बार बार अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने शुरुआत की। मैं इस पे राजनीति नहीं कर रही हूं, मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। इस देश में जब बच्ची पैदा होती थी, ये पुरातन समय से शुरुआत हुई। अगर बिटिया घर में पैदा हुई तो कई ऐसे प्रदेश थे जहां पर बिटिया को पैदा होने के पहले मार दिया जाता था, या बिटिया अगर पैदा हो गई तो उस बिटिया को पैदा होने के बाद खत्म कर दिया जाता था। और ये शुरुआत हुई, अनुपात बिगड़ा, और ये अनुपात बिगड़ने के कारण परिस्थितियां बहुत भयानक होने लगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाइए भी बेटी को पढ़ाइए भी। और जब ये शुरुआत हुई, आज वो अनुपात आप देखिए, ये अनुपात आज सुधरा है। मैं आपको इसलिए इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे मन को पीड़ा देती हैं, और महिला कभी राजनीति की वस्तु नहीं होती है। मैं इस सदन में उपस्थित थी, मुझे वो दिन भी याद है जिसमें हमारे 3 तलाक का मुद्दा था। इस सदन में लोगों ने जिन विषयों को रखा, 3 तलाक, जो लोग पीड़ित थे उस बहन से पूछिए 3 तलाक शब्द से वो कितनी भयभीत होती थी। और राजनीति के तुष्टीकरण के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति ने हर बार उनको मरने के लिए मजबूर किया। 3 तलाक का मुद्दा आज ऐसा मुद्दा रहा कि इस सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ताकत के साथ में शुरुआत करी। माननीय सभापति जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मुझे लगता है कि आपका संरक्षण तो हम लोगों को हमेशा मिलता है, लेकिन मुझे विशेष तौर पर आज मिलना चाहिए। मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहती हूं कि हमारे यहां पर राजनीति करने के लिए जब शुरुआत होती है तो हम लोगों को पीछे ढकेल दिया जाता है, या राजनीति प्रदेशों की बात की जाती है। लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ है तो सरकार को भी आपको साधुवाद देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने राजनीतिक तौर पर अगर आरक्षण की बात कही तो सरकार श्रीमती सोनाल मानसिंह। माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आज विशेष रूप से आप महिलाओं को संरक्षण दे रहे हैं, बोलने का मौका दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसने तय किया? तो 2 जर्मन महिलाओं ने इसको शुरुआत इसकी करी थी, और आज मैं इस सदन के पटल से ये मांग रखती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाए। नहीं, हम बराबरी की बात तो करते ही हैं। तो एनीवे, मैं आपसे बस कुछ, सबसे पहले सर, अभी बात हुई कल्पना चावला की, तो मुझे अभी मांडविया जी ने बताया है कि कल एक बहुत अद्भुत घटना घटी है कि पहली बार एक टैंकर शिप, पूरा क्रू महिलाओं का, कैप्टन से लेके सभी, वो बंबई से वाडीनार गया है। और दुनिया में ये पहली घटना है, दुनिया में ये पहली घटना है, और दुनिया के सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको बहुत सराहा है। सर, आई जस्ट वांट टू से अ फ्यू थिंग्स, प्लीज अलाउ मी टाइम। डिमांड्स मेड ऑन वुमेन, ये किसी ने लिखा है, मैं कोट करना चाहूंगी। इट्स वेरी हार्ड टू बी अ वुमन बिकॉज यू मस्ट थिंक लाइक अ मैन, act like a lady,
look like a beauty queen and work like a horse. और अभी जो मेरी बहन ने बात की, तो सर मेरा कल एक कार्यक्रम था स्त्री, और ये नाट्य कथा 2 घंटे की, उसमें मैंने कहा है आधे से अधिक हूं पर अधिकार से वंचित हूं। तो ये जो सारे क्षेत्रों में बराबरी की बात हो रही है, जहां पॉलिसी नीतियां गढ़ी जाती हैं, वहां पर अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि कितना प्रतिशत स्त्रियों का होना चाहिए। सर, ये कौन अधिकार देता है, ये मैं पूछना चाहती हूं। तो आधे से अधिक हूं पर अधिकार से अभी तक वंचित हूं, इस पे विचार किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, लोकसभा। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, लोकसभा। माननीय सभापति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी और सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। प्लीज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी सर, आपने बहुत सारी बातें कही अपने इंटरनेशनल वुमेन्स डे को लेकर। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। साथ ही साथ सर, मैं इस बैकड्रॉप में ये भी बात करना चाहूंगी कि जब कोविड आया और कोविड की मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहूंगी आज के दिन सर, क्योंकि ये महिला, मैं मानती हूँ कि राजनीति से ऊपर ये विषय है। और जब हम बात करते हैं कोविड को लेकर और कोविड लॉकडाउन को लेकर, सबसे ज्यादा गाज जो पड़ी है महिलाओं पे पड़ी है। उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर हो, उनकी समस्याएं को लेकर हो, डोमेस्टिक वर्कलोड बढ़ा हो, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा हो, चाइल्ड मैरिजेस बढ़ी हो, महिलाओं को जो पढ़ाई करती थी उससे उनको वंचित रखा गया हो, ये सारी मुद्दे देश के सामने आए हैं। मैं चाहूंगी कि हम देश में और पार्लियामेंट के माध्यम से इस पे चर्चा करें। आखिरी बात सर, बस एक चीज कहूंगी, इंडिया में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर बायस एक रिपोर्ट बताती है होता है वर्क पेलोड का हो या उनकी भागीदारी का हो। तो मैं उम्मीद करती हूं कि हम सब अपनी राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के मुद्दों को सक्षम तरीके से रखेंगे और उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान, लोकसभा। Thank you, Chairman, sir. At the outset, you just mentioned the United Nations theme for this year, Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Chairman, sir, women have always been on the forefront in terms of service. Speak about world wars, and we can think of the Red Cross. Speak about leprosy, we think about Mother Teresa and the missionaries. Whether it's Spanish flu, whether it's plague, whether it's any crisis, women are always in the forefront. However, they have to get the opportunity to play a full role in shaping pivotal decisions, Chairman, sir. Sadly, the deep-seated historic, cultural, socio-economic barriers prevent women from taking their seat at the decision-making table so that resources and power are more equitably distributed. They have always remained at the lowest paid jobs and many in extremely vulnerable forms of employment. Many audits have shown that not more than 6% of women have got a role of leadership. So we must think about it, and we can make a beginning, sir, by bringing the legislation on the 33% reservation for women in Lok Sabha and Rajya Sabha, because it has been proved, sir, that even during the COVID-19 pandemic, in many countries, women heads of government in Denmark, Ethiopia, Finland, Germany, Iceland, New Zealand, Slovakia, they have been widely recognized and appreciated for their quickness, for their activeness, for their effectiveness in the nation's response to the COVID-19 pandemic, sir. Right, Ma. Thank you. Thank you. This is the way one should put things. Dr. Ami Agnik. Thank you, sir. Hello. Thank you, sir. I don't know whether I'm audible or not. Please.
वो आपका सीट नहीं है ना, थोड़ा सा। Thank you, sir, for this opportunity on this wonderful day. छाया जी थोड़ा। But, sir, I would like to say that we are here celebrating the International Women's Day. 90% of our women in the rural areas or urban areas do not know that there is a day specially carved for them, and they do not know that there has to be a celebration on this day. Sir, I would like to bring to your notice and to everybody here that we are not talking about Women's Celebration Day here and talking to each other about empowerment, but we are talking about a participatory democracy in this country where every woman needs to live with a life of dignity, to take part in this democracy, and that is why only one instance comes to my mind as a women's rights crusader, that you take centuries in the past and maybe in the future there will never be a vision like Rajiv Gandhi's vision of bringing women into the local participation and to bring women as leaders. Right. Sir, a question was asked in this honorable house, how many women sarpanches have been there in the last 30 years after the 73rd and the 74th amendment? And so the answer given by the minister was more than 1 lakh sarpanches, women sarpanches have come in this country. This would not have been possible unless there's a vision. Okay. Sir, I wish that all these women get access to all the schemes, all the rights that have been given by this constitution, and every woman, empowered woman, should see that another woman gets empowered. Thank you, sir. Thank you, Amiji. This is Srima Dwivedi. सीमा द्विवेदी जी, लोकसभा, संक्षिप्त में प्लीज। माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत हृदय से आभार। आज महिला सशक्तिकरण के इस दिन पर आपने सारी बैठ के भी बोल सकते का अवसर दिया। सर, मुझे बैठ के फीलिंग नहीं आती, मैं उठ के बोल पाती हूँ। As you please. आपने सदन की सारी बहनों को आपने बोलने का जो एक नया उपक्रम किया है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। आज मान्यवर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। अगर मैं महिलाओं के अधिकार की बात करूं, कर्तव्य की बात करूं, मन्नर मैं अपनी बात बताती हूं कि आज तक मुझे इतना सम्मान मिला है, वो पुरुषों के द्वारा मिला है। मुझे कहीं ये फीलिंग नहीं हुई कि मैं महिला हूं, और मैं बहुत खुश हूं इस बात को लेकर के। मैं 1995 में से राजनीति में आई हूं, आज 2020 का वक्त है। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे कहीं पर महिला होने के नाते रोका गया हो। और मानवर, मैं इस सदन में आकर के मेरी निगाहें स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को ढूंढ रही हैं, जो हमारी प्रेरणा स्रोत हुआ करती थी, जो हमारी आदर्श हुआ करती थी। ऐसी हमारी बहनें पूरे सारे कार्य क्षेत्र में, चाहे वो हम वायुयान की बात करें, चाहे ट्रेन की बात करें, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, चाहे सामाजिक जीवन की बात करें, चाहे टीचिंग लाइन की बात करें, चाहे डॉक्टर की लाइन की बात करें, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर हमारी महिलाओं ने सम्मान न बढ़ाया हो। मान्यवर, ये बहुत पुरानी बात है। जब खेल जगत में हम लोग बहुत छोटे थे, जब सुनते थे कि पीटी उषा ने दौड़ लगा करके देश का नाम रोशन किया, स्वर्ण पदक दिलाया, तो ऐसे नाम को हम लोग बचपन से देखते चले आते थे। आज हमारी सरकार जिस तरह से महिलाओं को लेकर के तमाम नियम बना रही है, तमाम कानून बना रही है, महिलाओं को जिस तरह से प्रोत्साहन दे रही है, मान्यवर, यह काबिले तारीफ है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सदन की सभी महिलाओं को और देश में सभी महिलाओं को, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे नौकरी पेशे में कहीं भी हो, सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। खास करके मान्यवर, मैं जहाँ से 3 बार की विधायक रही, उस अपनी क्षेत्र की महिलाओं को इसमें बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। सीमा जी, धन्यवाद। संपत्ति अबुके जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण अवसर पे बोलने का मौका दिया। जिस तरह से अभी हमारी बहनें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बोल रही थी, मैं सर्वप्रथम तो आपको बहुत धन्यवाद देती हूं। उसके साथ साथ पूरे देश की बहनों को भी बहुत धन्यवाद देती हूं, और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जिस तरह से अभी मैं सुन रही थी कि तीजन बाई की बात आ रही थी, तो तीजन बाई को अवार्ड देने वाले भी हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ही है। जिस तरह से मैं चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, पूरे
देश में जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी जगह आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही हैं और जिस तरह से सम्मान की बात आती है, तो मैं बताना चाहूंगी कि आज पंचायत में हो या पार्लियामेंट में हो, जिस तरीके से हमारी बहनों का सम्मान हो रहे हैं। आज त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण भी मिली, उसके साथ साथ बहनें हमारी आगे आई और आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में 78 महिलाएं लोकसभा में और 27 महिलाएं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसके पहले मैं रिकॉर्ड उठा के आज देख रही थी कि इसके पहले राज्यसभा में मात्र गिने चुने 2-4 महिलाएं आती थी, पर आज जिस तरह से हमारी महिलाओं को हर क्षेत्र के हर वर्ग की महिलाओं को अवसर मिला है। और इसके साथ साथ यदि मैं कहूं तो अभी आपने भी कहा कि चाहे वो मानसिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, आज महिलाएं धीरे धीरे मुख्य धारा की ओर बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात आती है सामाजिक स्तर पे। आज धीरे धीरे सामाजिक क्षेत्र में भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बहनें हों या हमारे नगरीय क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हों, सबको बहुत ही सम्मान मिल रहा है। और उसके साथ साथ आज आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो जिस तरीका से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ओर से आज पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप बने और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने के बाद आत्मनिर्भर भारत के मार्गदर्शन में जिस तरीके से काम कर रही हैं महिलाएं, वाकई में काफी काबिल की बात है। और मैं आपको इस दिवस के अवसर पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। मित्रों, आई हैव रिसीव्ड ए नोटिस from Sri Mallikarjun Kharge ji under Rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business of his intention to move the motion for suspension of business rules on 8th March 2021, that this House agrees to suspend the listed business to discuss huge and frequent increase in price of petrol, diesel, LPG, even when international crude oil prices are significantly low, and which is leading to further increase in price of all essential commodities, of all which is putting extreme burden on the shoulders of the common man, particularly in the past COVID economic crisis. I have gone through the notice and I have come to the conclusion that this issue can be discussed during the course of discussion on appropriation bill, and also we have enough opportunities to discuss during this budget part of the session. Please. Sir, this is a very important issue and it is a burning subject. And throughout country, people are agitated. That's why we are requesting you to suspend all the rules under Rule 267 and give us a chance to speak on this subject, and ultimately what the government is going to tell about this, we will see. Sir, you are well aware, and it is not new to you. Now the petrol prices nearly 100 rupees per litre, and the diesel prices are more than 80 rupees. And LPG also increased, and all the petroleum products have gone up, and nearly 820% of petrol, 820% petrol, and around 258% excise duty after 214, and nearly 1,21,000 crores. Right. We are not discussing in Sir, issue. sorry. You have given a notice. I have allowed you to mention the subject. 21 lakh crores. Yes. Sir, 21 lakh crores have been collected by putting excess duty. Okay, Kharge. And all these things. I have allowed you. Because of this, the entire country is suffering. Right. The prices are going up. Right. No.
This is very important issue. Because it's an important issue, I have allowed you to mention it, though you know the rules position. 267 is at the discretion of the chair. I have gone through it. There are enough opportunities, including appropriation bill and other occasions, to discuss it. But still, because you are a senior and also leader of the opposition, you have given a notice. I have just allowed you to mention the subject. You have rightly mentioned the subject, and we leave it there, and we move on. It is very important. No. Sir. Now the... Sir, please, in I have to go to... entire country, farmers are suffering. This will not go on record. This will not go on record. This will not go on record. You know... No. Please, it is not going on record. Please, it is very important. We should run the house. And this is the first day. This is the first day, please. Please. This is not going on record. Why are you really wasting your energies and taking the time of the house? Please bear with me. I have allowed you to express your views, and you have clearly expressed it, and then we must go on. Please. No. Every issue is important. Every issue is important. No, please. Come on. But now it is a question hour. Question 136. Narayan Das Gupta, question hour. Please, baith jaiye. Question hour. Narayan Das Gupta. I have not allowed it. Please, question hour. Narayan Das Gupta, Lok Sabha. I am in Lok Sabha, sir. Lok Sabha. Laid on the table of the House. Question number 136. Right. Minister. Answer is laid on the table of the House. Right. Supplementary, Narayan Das Gupta. Yes, sir. Please. You are all aware of the rules. So, question hour also is important. Please. Question. Sir. Please go to your seats. Krupaya baith jaiye. It's not going on record. Why are you wasting your energies? Continue kariye. Narayan Das ji, continue kariye. Sir, I have a question. Because the minister has said there is no established practice to identify the reasons and causes for such type of displacement. May I ask the minister whether we have identified at any point of time the reasons and causes for such type of displacement, or whether we have taken any steps in advance so that this problem is addressed. Thank you. Minister, please, right. Please. You will be spoiling the others' opportunities. The question hour is important. As he has asked a specific information, I will definitely write to him and give all details. No comment. Second supplementary. I would like to know, sir, whether this steps has been taken to address this problem, because every year this happens, although they have said... ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, रिले नहीं होगा, रिपोर्ट नहीं कर सकते. No relay, no report. To address this issue. Yes. ये जो लोगों को डर लगता है कि ज्यादा बारिश होना या कभी ज्यादा बाढ़ आना, इसका ये जलवायु परिवर्तन से कोई संबंध है क्या? लेकिन लेट मी मेंशन आईपीसीसी रिपोर्ट, आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग of 1.5 degrees centigrade. The social, economic, environmental factors underlying displacement of people by climate This is not the way. are complex and Please don't waste the time of the House. Therefore, important questions are there. to effect of observed climate change. First day of the House.
And you want to disturb the house like this? With any degree of confidence, it's challenging. So IPCC also said, after study, that it is not possible to attribute everything to climate change. Right. Right. This is not the way. Unnecessary. ये नहीं आएगा रिकॉर्ड में. आप लोग होश में आके नियम को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड में आएगा नहीं. आपका होश और वो सब बर्बाद होगा. अननेसेसरी. सुभाष चंद्र बोस, फिर सुभाष चंद्र बोस इन लोकसभा. I am from Lok Sabha, sir. The rising ocean temperature and increased acidity, the entire food web is being altered and the productivity of global fish production is being impacted. This can be severely impact the food security as well as livelihood of the coastal areas of the country. 9 out of 30. ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज मत करो. ये लास्ट इज अनपार्लियामेंट्री. Don't bring unparliamentary things to parliament. It's an unparliamentary word. You all know. अब देखिए रिकॉर्ड देखिए ना. रिकॉर्ड मैंने ने बनाया. ये पुराना जमाने से चल रहा है. रिकॉर्ड देखिए. If you don't want the house to continue, you don't want the house, you want to deprive the people of the question and answers, then I can adjourn the house. You don't want. You have been in government for years. Please understand. The opposition, the entire house wants the house to continue. अब लोग जाइए please. Please go to your seat. Please go to your seat. Ask your members to go to your seat. I have given an opportunity to all of you. ये तो लोकतंत्र का मजाक नहीं करना. This is not the way. This is not the way. This is not the way. I don't want to take any drastic action on the first day. The house is adjourned to meet at 11 o'clock. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी. A statutory resolution. जो रूल 265 में नोटिस दी थी, सॉरी 267 में, तो उसमें हमने स्पष्ट कह दिया था कि आज के दिन जो डीजल और पेट्रोल के दाम माननीय एलओपी साहब, परंपरा यह है कि आप बोले तो उसमें ना वो किया जाए, लेकिन माननीय चेयरमैन इस पर ऑलरेडी बता चुके हैं कि मौका है कि अभी मंत्रालयों पे बहस होनी है, अप्रोप्रिएशन बिल आने वाला, ये सारी बातें की जा सकती हैं. नहीं, ये सारी बातें की जा सकती नहीं कर सकते. ये दिन पे दिन देखिए, डीजल और पेट्रोल के बिल रोजाना बढ़ते हैं. अगर वो बिल आने तक अगर हम रोक जाएंगे तो जनता की हालत क्या होगी? आप जानते हैं, माननीय चेयरमैन साहब ने इस पर जो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. मेरी सीमा है. It cannot be discussed now. Now the bill will be taken up. Now the bill will be taken up. A statutory resolution, nothing will take business. मैंने आपको बताया है, माननीय चेयरमैन साहब इस पर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं. आप
इतने अनुभवी आदमी, आप सारे रूल्स को जानते हैं। आप जानते हैं रूलिंग ऑफ द ऑनरेबल चेयरमैन कैन नॉट बी रीओपन। माननीय चेयरमैन के डिसीजन को रीओपन नहीं किया जा सकता, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, कृपया कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। हाउस के सामने मेरा आग्रह है कि आपको अवसर मिलने वाला है इस पर बोलने के लिए। आपको बताया मंत्रालयों पे बहस होनी है और अवसर आने वाले हैं। मेरा आग्रह होगा कि इस बिल को लें और चलने दें। स्टेचुरी रेजोल्यूशन आप जानते हैं, माननीय चेयरमैन साहब ने जो कहा उसको, उस डिसीजन को रीओपन नहीं कर सकते। उनकी रूलिंग फाइनल है, उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। स्टेचुरी रेजोल्यूशन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 टू बी डिस्कस टुगेदर। श्री के रागेश नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कृपया शांत रहें, इस पर कृपया शांत रहें। श्री विनय विश्वम, श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, कृपया अपनी सीट पर जाएं। श्री स्टेचुरी रेजोल्यूशन मूव करें। माननीय सांसद कृपया अपनी जगह पर जाएं और हाउस को चलने दें। आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। कृपया आप जानते हैं कि माननीय चेयरमैन के डिसीजन को पुनः रीओपन नहीं किया जा सकता। कृपया सदन की कार्रवाई चलने दें, मेरा आपसे आग्रह है। बेल से अपनी सीट पर जाएं। सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, arbitration and so we start with the arbitration and conciliation amendment bill. And statutory resolution. एक प्रस्ताव रखा गया था बातचीत करने के लिए पेट्रोल डीजल और गैस के प्राइस हाइक के लिए, क्या हुआ उसका? So let's adjourn the house for 15 minutes. We'll adjourn the house for 15 minutes. Yes.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Now I'm going to say something, and I am sure this is happy news for all the members. So, honorable members, on the request received from many members from various parties, Honorable Chairman has decided that from Tuesday, that's tomorrow, the 9th March 2021, the sitting of the Rajya Sabha will commence from 11 a.m. to 6 p.m. as per usual timings of the House. The members will be seated in the Rajya Sabha chamber and the galleries only, with some distancing. Details of the sitting plan will be intimated to the party members today. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 9th March. Thank you. Thank you.